हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी अनमोल अग्रवाल। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इफ़ यू हैव टू सर्च ऑन योर पेज यूजिंग अ पर्टिकुलर क्वेरी, द क्वेरी कुड बी एनीथिंग, लाइक इट could be the first name of the user, the last name, or the mail ID, or the gender, or anything else. So how you will do it with the React. So without the further ado, let's get started. So basically this is my simple React app. This you could get by running this npx create react app command, and I will be using Material UI so as to build this thing whole fast. And yeah, let's get started. So basically now I'm importing some of the dependencies for Material UI, and after which like I will add an input field, a text field basically. Let's take this one. This is looking fine. So let's take this one. Okay, and I'm removing it. Okay, and I'll name it as input. So this would be our input box. uh, and and also like let me import this text field also. Text field from slash um, okay, so this is our input box. Let me give it some styling. um, so let's give it, the margin top is like 50 pixels. Okay, so it's looking fine. So this is our input, and now what I have done, like for this project I had used this users file. Let me import that also. um, okay, so let me show you what is there in this users JSON file. So basically it's containing this ID of a particular user. This is the sample data. So यहाँ पर ये first name, last name, email, gender and IP address and all these things is there. This is just the raw data. So ये मैंने एक website से उठाया. So after it, like let me import this data also. Import users from slash, not dot slash. Okay, so let me move it here. And what I'll do, like I'll use this users dot map, and for every user let me show it. So let's take this diff, and ID would be user dot ID, and name would be user dot first name, right? um, let's do it, and I'll give some styling also. Let's say padding is 5 pixel. Okay, users.json is not found. Okay, this is working fine. And okay, user dot first name. Why I'm doing this? This should not be happening. Instead, I should be using these brackets, otherwise I have to return this. Yeah, so this is there. So these are the list of the users which I have fetched from this file, which I have fetched from this users.json file. So basically like if now what I want, like I wanted to search for a particular user on the basis of my input query.
So let's say if I type SA and something like that, so I want the users which have this included in it, like SA included in their first name. So how would I do it? So basically now, right now, you could see nothing is happening. So let me use this use state hook. Okay, so basically let me have this constant query set query and use state hook. So, and let me import this use state hook also. And what I am doing, like on change, whenever this changes, so what I'm going to do is I'm going to call my set query function, and I'll show you one more way of doing it. So let's say this is E, and I'll set it with E dot target dot value. So whenever this input changes, like something is added to it, so this on change function is getting called, and we are setting our query, which is this using this set query function. So this is what we are trying to aim. So let me also like show you what we are having in query. So let's console that also. um, let's move it down. Okay, so see, you could see like whenever I am tapping anything, so this is getting printed like my whatever my query is. So this is right. Now we have to search on the basis of this query. We have to filter our users on the basis of this query. So what I'm going to do is like I'm going to use this. Um, so basically, what I'm going to do is I am going to create this filtered users. So this would be equal to users dot filter, and what I'm going to filter on is, so user dot first name dot includes. First of all, I'll convert this first name into the lowercase. So let us do without converting it first. Okay. So let's move it in this way only. So user dot first name dot includes my query, whatever my query is. If it includes, then I am going to filter that out, and I am going to use this filtered users in my mapping instead of users. Okay. So this is what I am doing. Yeah. So right now you could see all the users are there, and let's say if I search on AG, I'm getting all these values. But the problem with it is, like if you search with let's say AGN, or so you won't be seeing the capital AGN. Let's say मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर आप कैपिटल लेटर्स के साथ भी सर्च करोगे ना, कैपिटल AGN, so अब in case you are searching with AGN which in which all the characters are small, so you won't be seeing that as an input. So इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, टू लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे हर कैरेक्टर को अपने यूज़र के, एंड देन व्हेन आई विल डू इट, सो आई एम एबल टू सर्च दिस AGN or anything else. So it won't be dependent on my type case of the characters. So this is what so अब ये तो हो गया हमारा, but the problem with it is like, सो लेट से अब अगर मेरे को मल्टीपल चीज़ों पे इसको फिल्टर करना होता है, लाइक फर्स्ट नेम पे भी, लास्ट नेम पे भी, ईमेल पे भी, जेंडर पे भी, सो मैं कैसे करता हूँ उस चीज़ को? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट अ टेबल फॉर दैट. So let's move towards table, and this one is looking good. We could copy this out. Let's first take this, and let me comment this out, and I'll push the code also for you, so that you could practice it out. And these are my rows.
So like the first thing I want is this, my first name and my last name and my email, and yeah, and my gender. And let's remove this. Okay, and for every filtered user I'm going to map it with the user, and user key would be user.id, right? And first thing would be user.id. I'll add that id thing also. And user dot first name and user dot um, first name, user dot last name, and user dot email, and user dot gender. So ये तो हो गया. And I'll remove this also. Table body, this is done. And what I want is, I want here this id also. So let us see how it's going to look like. Okay, table container. Okay, I haven't defined these things, so I'll copy it from here. Okay, so you could look at um, this is somewhat our page is looking right now. So basically अब हम क्या चाहते हैं कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल कहीं पर भी, जैसे एजीएन मेरा फाउंड हो फर्स्ट नेम में भी या लास्ट नेम में भी या ईमेल में भी, तो वो सर्च हो जाना चाहिए. एंड आई शुड बी एबल टू सी ऑल दोज फिल्टर्ड यूजर्स. सो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक तो तरीका ये है कि यहाँ पर जो मैंने फ़िल्टर फंक्शन बनाया है, इसके लिए मैं हर एक क्वेरी के लिए उसको और कर देता हूँ, लाइक इन दिस वे. या फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, तो मैं उसके बेसिस पे उसे सर्च कर लेता हूँ. सो लेट्स से इफ़ अगर मैंने जैसे एजीएन टाइप किया तो एजीएन यहाँ पर है, इस वजह से आ गया यहाँ पर. बट यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट नेम में नहीं है, लास्ट नेम में है. सो इस वजह से ये वाला इनपुट आ गया यहाँ पर फर्स्ट नेम में. सो बेसिकली ये हमने किया है, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट अप्रोच. बिकॉज अब आप अगर आपको फाइव सिक्स पैरामीटर्स और अगर डालने होते तो आप हर एक के लिए और करते हैं, और उसको टॉगल करने में लाइक देयर दिस इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ राइटिंग द कोड आउट. सो बेसिकली व्हाट आई कुड डू इज़ कि मैं एक पैरामीटर्स नाम का एक वो बना देता हूँ, एक एरे, जिसमें मैं सर्च करूँगा कि मैं किन किन पैरामीटर्स पे अपना रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ. सो first name, last name, and let's say email. So what I want, uh, like so I want my users to be filtered out on the basis of like users dot sum. If a particular user is containing a particular parameter, this should be parameters for a particular parameter. अब यहाँ पर ये मेरा पैरामीटर इसमें आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के जो भी एट्रीब्यूट्स को उनको फाइंड करने के मेरे पास दो तरीके होते हैं. एक तो डॉट नोटेशन होती है कि यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, एक मेरे पास तरीका होता है एक ब्रैकेट नोटेशन होती है. दिस इज़ माय डॉट नोटेशन, एंड दिस इज़ माय ब्रैकेट नोटेशन.
सो बेसिकली ये वाली नोटेशन तभी काम करती है जब मेरे पास एक्सप्लिसिटली मुझे पता हो कि मेरे पैरामीटर की वैल्यू है क्या, लाइक वो हार्ड कोडेड हो. सो दिस नोटेशन वोंट वर्क हेयर. सॉरी, दिस इज द ब्रैकेट नोटेशन. सो ये जो डॉट वाली नोटेशन है ये तब वर्क करती है जब मेरे को पता हो कि एक्सप्लिसिटली मेरे पैरामीटर का नेम क्या है या मेरा एट्रीब्यूट का नेम क्या है. बट इन केस हमें यहाँ पे पता नहीं है तो दिस डॉट नोटेशन वोंट वर्क हेयर. सो उसके लिए मेरे को यहाँ पर ब्रैकेट नोटेशन का ही यूज़ करना पड़ेगा. सो डॉट इंक्लूड्स यूज़र पैरामीटर्स फॉर पर्टिकुलर यूज डॉट इंक्लूड्स माई क्वेरी. सो अब मैं इसके बेसिस पे उसे फ़िल्टर कर लूँगा. सो यहाँ पर अब ये जैसे अच्छा मैंने वो लोअर केस नहीं किया है यहाँ पे, तो इस वजह से सम ऑफ दी इनपुट्स वर सम ऑफ दी यूजर्स वर नॉट गेटिंग प्रॉपरली फिल्टर्ड. सो या सो यहाँ पर अब सेम ही वही आउटपुट आ रहा है जो पहले आ रहा था, बट दिस इज़ द बेटर वे ऑफ राइटिंग, क्योंकि अब अगर मेरे को कोई भी पैरामीटर कम करना है तो मैं वो डायरेक्ट यहाँ से कर सकता हूँ. कि जैसे मेरे को फर्स्ट नेम के बेसिस पे ही सर्च करना है तो मैं यहाँ से इजीली उसे रिमूव कर सकता हूँ. तो अब यहाँ पर सिर्फ 4 ही पैरामीटर्स बचते हैं. बट अब जैसे अगर मैंने लास्ट नेम ऐड किया तो फिर अब यहाँ पर ये 5 आ जाएंगे. सो इट्स गेटिंग ईजी नाउ. सो दिस इज़ द बेटर वे ऑफ राइटिंग द कोड.